अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सय्यमा अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व रसूलिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि अतियबुत तहिय्यति वस्सना व मन तबिअहु इला यौमिल जज़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न ये जां फ़क़त दो जहां फिदा, न ये जां फ़क़त दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। साहिबुल माली हज़रत फ़ख़्रुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम खुशतर सिद्दीकी क़ादरी रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली, उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Indeed, it is an honor for me to be here in this auspicious program which is being celebrated in the memory of Sayyidina Ala Hazrat Fazil Barelvi Rahmatullahi Ta'ala alayh. It is just an fortunate incident that I am here, and in this short time, as I am ordered, in fact, I would like to say a few words as MC, my respected colleague, Hazrat Maulana Hamidi Sahib has highlighted the point of love for which Ala Hazrat Fazil Barelvi Rahmatullahi Ta'ala has sacrificed his life. Verse of the Holy Quran, the Quran Muqaddas, which I have recited, Allah Subhanahu wa Ta'ala says, Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. जो लोग, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, नेक काम किए, अनकरीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा. Those who believed and did good deeds, soon Allah subhanahu wa ta'ala will make love for them. As we are celebrating this program in the memory of Sayyidina Ala Hazrat Fazil Barelvi Rahmatullahi Ta'ala alayh, in fact that is the practical result of this particular verse, that those who believed and spent their life in good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who makes love for them. And it is the Ala Hazrat Fazil Barelvi Rahmatullahi Ta'ala alayh's acceptance by Allah subhanahu wa ta'ala which has pulled us to come together, celebrate this program. And this is, people of Lodium, every year they are fortunate to celebrate this program. This is celebrated throughout the world. इसलिए कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रहते हैं और जो उनकी मोहब्बत में इस दुनिया से जाते हैं, उनका नाम, वो असल में मरते नहीं, वो ज़िंदगी जावेदानी पा जाते हैं. आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, why he is so near and dear to us is, he set a goal for his life. He set an ambition for his life. He set an objective for his life. He set a destination for his life. And then he sacrificed his entire life for that. And that was to promote the love of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, which is the total deen. Which is the total deen. If we take out this component from our religion, love for our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, I don't think there is any deen left. This component is so important. It is the soul. And as the body cannot exist without soul, the religion, the deen itself cannot exist at all. It is absolutely impossible for the deen to exist without the love of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. And Ala Hazrat Fazil Barelvi Rahmatullahi Ta'ala always raised and kept that flag of love of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam high. And this is why, and Allah subhanahu wa ta'ala says, Fadhkuruni adhkurkum, you remember me, I remember you. The one who remembers Allah, the Rasul, is remembering Allah, and the one who remembers Allah, he is immortal. Allah is immortal, but Allah subhanahu wa ta'ala gives that limitless life to that person. As long as this world is existing, the name of the lover of the Rasul sallallahu alaihi wasallam is existing.
आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दुरुस्त बात तो यह है कि आपका कलाम अगर देखा जाए तो the whole mission of Ala Hazrat Fazl Bari Rahmatullah revolves around the love of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. As we find people today say Ala Hazrat was very a great critics, and he actually issued a lot of fatwa against the people, but that was the status of his love. And if I am correct, when people ask Maulana Ashraf Ali Thanvi that Ala Hazrat Fazl Bari Rahmatullah issued a verdict against you that you are a non-Muslim, he replied that Ala Hazrat was at that high status of love of Rasul sallallahu alaihi wasallam that if he would not have issued the fatwa of kufr against me, he would have been himself a kafir. He was of that status, that high in that status of love. And Ala Hazrat Fazl Bari Rahmatullah Ta'ala, I was just, I opened up a page of Hadaya-e-Bakhshish, which is the proof, a living proof of love of Ala Hazrat. And that is the lesson which he taught us. Why? Because if that love of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is alive, then the person is sound and he is correct on the right path. And he says, Dahan mein zuban tumhare liye, badan mein jaan tumhare liye. For who? For Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. We are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah's Rasul is so beloved to Allah himself that the one who loves Allah's Rasul, in fact, is loving Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wa Rasuluhu ahakku an yurduhu. There is no difference. There is no difference. दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए. That was the entire summary of the life of Ala Hazrat Fazl Bari Rahmatullah. He says this zuban, this tongue which I am granted by Allah subhanahu wa ta'ala, it is to praise Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Badan mein jaan tumhare liye. Energy in my body is for the sake of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. He says we came in this dunya, we are brought in this dunya. Allah subhanahu wa ta'ala has brought us in this dunya. He has created us. For who? For Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Lawlaka lama khalaqtul aflaq. Uthen bhi wahan tumhare liye. On the day of judgment, apparently there is going to be accountability. But muhabbat wala, he translates in this sense that we are going to be raised on the day of judgment for the sake of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. फ़कत इतनी गरज है इनेकाद बज़्म महशर से. एक और शायर ने कहा है, फ़कत इतनी गरज है इनेकाद बज़्म महशर से कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है. He said that is whole issue of this mahshar, is qiyamah, is to show the people the status, the dignity and the glory of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Persian शायर says, ज़बान ता बवद दर्द हाँ जाएगीर, सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर. ज़बान ता बवद दर्द हाँ जाएगीर, सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर. He says, as long as tongue in my mouth is moving, it is moving, it is movable, it's doing its function. Sanae Muhammad bawad dil pazir. The most beloved thing to me is to praise my Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And life is for that purpose. Ala Hazrat Fazl Bari Rahmatullah Ta'ala, as I have recited that verse of Ala Hazrat in the beginning, आप फरमाते हैं करूँ तेरे नाम पे जान फिदा. इतना खूबसूरत शेर है और इसमें मोहब्बत की वो रमूज पाई जाती हैं कि एक शायर अपने जज्बात का इजहार करता है. He expresses his sentiments, his emotion, and he goes to that extent where he says करूँ तेरे नाम पे जान फिदा. He says, I would love to sacrifice my life for the sake of my beloved Mahbub sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Then he says, na ye jaan faqat do jahan fida. So I'm not satisfied. If I sacrifice my life for Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam, I'm not satisfied. I'm not contented. Na ye jaan faqat do jahan fida. I'm only satisfied, not even then. I would like to sacrifice this world's for Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, दो जहां, ये दुनिया और आखिरत दोनों कुर्बान कर दो नबी करीम अलैहि सलाम की जात पे, तो तब भी इत्मीनान नहीं. कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना ये जान फकत दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा. After sacrificing every creation of Allah for Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, I'm not satisfied. I'm not satisfied. Look at the status of love, sentiments, so jazba.
जो मुहिब को महबूब के करीब करता है, हम इसकी लिमिट्स को समझने से भी कासर हैं। दो जहां से भी नहीं जी भरा। कहते हैं ये दो जहां जो अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं, इट इज टू लिटिल टू सैक्रिफाइस फॉर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दिस इज व्हाट मस्ट आई डू। I haven't got the millions of words. If I had, I would have sacrificed that for Rasulullah sallallahu. Follow the life pattern of Nabi Akram sallallahu ta'ala wasallam. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasana. The model life, the life pattern. And in today's time where the world is suffering, the only guarantee of the global unity, the global success is come and let's we all follow the shining footsteps of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. History tells us the one who was on that track, he is victorious, he is successor, he is fortunate. The one who lost that track, he actually destroyed himself, he lost himself. इकबाल ने कहा था, शायर मशरक अल्लामा इकबाल, कि मुझे गर्ज क्या थी रकू से, मुझे काम क्या था सजूद से. I mean salah is obligatory, I mean action, we must pay. And he says मुझे गर्ज क्या थी रकू से, मुझे काम क्या था सजूद से, किसी नक्शे कफे पा की तलाश थी जो झुका रहा नमाज में. He said that I was not making raku for raku. I was not making sajda for the sake of salah. He says I was bending in raku. In fact, I was finding for someone's shining footprints, impression of someone's foots. This is why I was bending in the salah. किसी के नक्शे कफे पा, किसी के कदम मुबारक का इंप्रेशन तलाश करने के लिए मैं नमाज में झुका रहा. वो जो मोहब्बत वाले हैं वो इबादत का तर्जमा इस हॉरिजन से करते हैं, इस स्पेक्ट्रम से करते हैं कि मुझे इन रिचुअल से मुझे कोई ताल्लुक नहीं था अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने एक मिसाल ना होते. असल में वो इस तरह से हदीस की तरफ जा रहे हैं कि सल्लू कमा रायतमुनी युसल्ली, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह नबी करीम अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ी. तो हर अदाए रसूल, सुन्नत रसूल, मोहब्बत रसूल का नमूना है. गालिब ने कहा था असल में it is such a chapter of love, it is quite long and it has in fact no limits, because love is such something which does not come to an end, and that's why the chapter of love does not also come to an end. And एक शायर ने ये भी कहा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए. जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ. Lives came to an end, pen, ink dried, everything finished. But we could not finish, we could not complete the one chapter of the life of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. One chapter of the one quality. तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ. We could not complete the one chapter of your one quality Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. और गालिब ने तो एंड ही कर दिया. So Ghalib says why we are trying, or is this limited, and we are trying to gather the thing and to prove that we are discussing and highlighting the love of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam and the tarif. He says Ghalib sanae khaja be yazdan guzashte hain. Ghalib sanae khaja be yazdan guzashte hain ke aan zaat pak martaba dane Muhammad ast. He says if you want to praise someone, you must at least have the introduction of that personality, then you can praise. But our vision is too short to understand, to recognize the status and the dignity of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. He said then it is not our job. Leave this job to that personality who has created his beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, who is Allah subhanahu wa ta'ala. And the entire Quran is the tarif of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Who can say better than the Quran Muqaddas? And Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam told Sayyidina Siddiq Akbar, lam yarifni haqiqatan ghayru rabbi ya Abu Bakr. Oh Abu Bakr, nobody knows my reality beside my Allah subhanahu wa ta'ala. So Ghalib says, Ghalib sanae khaja by yazdan guzashtem. Leave this whole chapter, this whole story to Allah subhanahu wa ta'ala, because he is the only one who can do justice to this chapter of the tarif of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. तो हम तो उन लोगों में हैं जो ये कोशिश करके we are actually trying to be among those who mention about Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, and this was the quality of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala which actually is keeping alive. It will keep Ala Hazrat alive in our hearts
till the day of judgment. And that's the reward which Allah Hazrat, and make dua that in the company of Allah Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, on the day of judgment we must also get that reward which Allah Hazrat Fazl Barelvi rahmatullahi ta'ala and other lover and the praiser of Nabi Akram sallallahu ta'ala wasallam is going to get. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this our gathering, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to follow the right path and uswa hasana of Nabi Akram sallallahu ta'ala wasallam. Al-azmatu wal kibriyau laka ya rabbal alamin wa salatu wa salamu alayka ya rahmatan lil alamin. This was learned scholar Hazrat Mufti Ismail Sahib from Cape Town, who has presented very informative talk and left us with a lot of hints to think. Now, dear brothers, we have Hazrat Mufti Akbar Hazarvi Sahib amongst us, and I would like to ask him as well for a short time to come and register his name for this function. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैयत और जनाजे की वजह से ताख़ीर हो गई। अभी तक जिस तरह हाज़री और क्राउड होना चाहिए था नहीं हो सका, चूँकि लोग अभी तक वहाँ मसरूफ़ हैं और प्रोग्राम भी लेट शुरू हुआ। तो इसके बाद भी 40वें का प्रोग्राम है, तो इसका तकाज़ा ये है कि हम लोग तो एक दूसरे को सुनते रहते हैं, बेहतर ये है कि हम अपने मेहमान को सुने। तो मेरे भी जो चंद मिनट हैं मैं उनको नज़र करता हूँ और इंशाअल्लाह हम सब मिल के सुनेंगे। दुआ अल्लाह हमें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं। जिस शख्सियत का बयान सुनने के लिए आपकी निगाहें मुंतज़िर हैं और आपके कान मुंतज़िर हैं, मैं उनको दावत दूंगा। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम खुशतर सिद्दीकी रज़वी क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली से है। हज़रत साहब इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु मरकदहू की सीरत मुक़द्दसा पर रोशनी डालेंगे। उनके बयान से कबल इस्तक़बालिया तौर पे पुरज़ोर नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़े रज़ा। नहमदुल्लाह वल उला वल जूद व बिहिल इतिसाम फिल मक़सूद व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह व अला आलि खैर खल्क़िल्लाह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिही व करीमिही, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।